Currently, there's an intense heat wave as far as North India is concerned. Especially in Uttarakhand, we are hearing of temperatures soaring, especially in Dehradun. The searing heat wave in North India is proving to be one of the harshest in the country's history. This summer, the temperatures have crossed 50 degrees Celsius in many areas of North India, including Delhi. Parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Bihar and Jharkhand are all reporting temperatures above 46 degrees Celsius as we speak. Now, come summer, we are used to seeing heat alerts from the IMD for various parts of India. This year, these alerts began in February itself. 41 degrees at 10 p.m., the nauseating heat all day. Those of us confined in IAC, our offices and homes find it unbearable. Just imagine how dreadful it is for those who are forced to live and work outdoors with no alternative. But for further clarity on the forecast, we have with us former Director General of the IMD, KG Ramesh. Thanks so much, sir, for joining us on NDTV. Yeah, the scorching heat in most parts of North India, it seems there's no sign of abating. Some relief was on the radar, sir, but has the forecast changed? No, it was expected that some moisture from Arabian Sea would start coming through Gujarat and East Rajasthan and West Madhya Pradesh. So that is getting delayed. So that is the reason we are not getting relief. At the same time, monsoon is stagnant on the eastern side over Bengal itself, even from 1st June. So that is another reason. Right, not just Delhi, but red alerts have also been issued for Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana, right, sir? Yeah, basically what is there, as long as monsoon doesn't cover any parts of India, heat wave will continue. So since monsoon is stagnant over Bengal itself, so westwards of Bengal, right from Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, West UP, Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan are all under the continuous heat wave. So that is the reason. Right. In fact, Bihar is undergoing a record-breaking temperature surge. But sir, yes, Delhi has already endured 8 straight days of heat wave conditions. How soon can Delhi and the National Capital Region expect relief from the scorching heat? See, intermittently, unless monsoon comes, real abatement cannot happen. And intermittently, because of dust storm, some decrease can happen for a few hours and maybe half a day. But again, it will revive once the day starts becoming warmer and warmer. But after 27th, perhaps by 26th, 27th, most of the UP from Bihar side should get relief, and only heating might persist West UP, Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan. So that is the sort of possibility we are seeing at the moment. Right. Meanwhile, we have a ground report lined up for our viewers from Delhi at the moment. Delhi, meanwhile, IMD has issued a red alert I beg your pardon, for the National Capital Region, along with Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. Let's go across to my colleague Tanushka, who joins us live from the National Capital at the moment. Tanushka, the IMD has issued a red alert for Delhi for today. Yes, I'm at the India Gate area right now. As you can see around me, this area is supposed to be, bustling with tourists, but it's barely has any people right now out here because of the intense heat. We know that the IMD has issued a red alert in Delhi, UP, Haryana and Punjab for the past week as well as today especially. Yesterday, the Safdarjung station recorded a temperature of 44.8 degrees Celsius, and today the temperatures are still expected to rise up to 45 degrees Celsius. While western disturbances are expected to bring some sort of relief in way of sporadic rainfall in some pockets of Delhi NCR tomorrow, what we can expect is a minor cooling effect across the region. But all in all, the temperatures is still continue to remain at such a high. And as you can see around me, these vendors who flock this area, usually they're mostly always standing here. They don't have any customers here right now. So the heat is not just affecting health of people, but also of income of these groups of people who don't get customers throughout the day. They're just standing here through the day, managing their
household and managing their incomes in any such manner. Most of them say that they have income in the evenings mostly. Let us get over here and speak to an ice cream vendor and see what he has to say about the summer conditions. शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. आपका नाम और आप यहाँ पर आइसक्रीम जो सेल बेचते हो, तो आपकी दिन में कितनी आमदनी हो जाती होगी और कितना फ़र्क हुआ है आपकी आमदनी में? आमदनी में तो बहुत फ़र्क हो गया. ऐसे मान लो 2000 रुपये का फ़र्क हो गया ना. वैसे तो 5-6 हज़ार की बिक जाती थी और अब तो वही 2000-1500 रुपये की आइसक्रीम बिकती है. रात को बिक जाती है करीब 2000-1500 की. और गर्मी के कारण दिन के समय कोई भी कस्टमर आते, कितने कस्टमर्स आते हैं? कस्टमर तो बहुत ही कम आते हैं. कस्टमर ऐसे मान लो 20% कस्टमर आते हैं 100 में. और शाम को ही कुछ टाइप का भीड़ आता है? शाम को ही आती है, करीब 5 बजे के बाद भीड़ होती है. तो आप फिर भी इस गर्मी में कैसे मैनेज कर रहे हो? मैनेज क्या कर रहे हैं, कहीं पेड़ के छायरे में खड़े हो जाते हैं बस. कोई सताने के लिए आ जाता है, ठंडक के लिए, तो इस करके वहीं बिक जाती है 400-500 रुपये की, 400-500 की, 700 की, 800 की ऐसी बिकती है. Shukriya. So as we heard right now from this vendor here is that he would usually earn, what he would earn of a day would be 4,000 rupees, but during summer season his earnings have come down by half. He now earns just 2,000 a day because in the main half of the day he is not getting any customers, so there's practically no earning, and whatever he's earning right now is only from the evening slot of customers. So the this is the off effect of heat that's affecting such various cross sections of people. It's not just health wise, a lot of us sitting in our AC rooms, but these are the people who are out here on ground. Absolutely. Battling the heat in real terms. Back to you. In fact, Tanushka, similar stories are emerging from Uttarakhand as well, where our special correspondent Kishore Rawat joins us from. Kishore, there's a heat wave in Uttarakhand and temperatures are soaring in Dehradun as per our last update. बिल्कुल, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, खासकर 5 जिलों में, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये 3 ज़िले तो मैदानी हैं. जाहिर सी बात है इसमें हीट वेव का अलर्ट तो होना ही लाजमी था. लेकिन पौड़ी और नैनीताल जो कि पहाड़ी प्रदेश है उसमें भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. इसकी वजह यह है कि मार्च, अप्रैल और मई और जून का जो आधा गुजरा है उसमें बारिश नहीं होने की वजह है. जून में अभी तक -77% बारिश नहीं हुई है. इसके अलावा जो अप्रैल था -84% बारिश नहीं हुई है. बारिश नहीं होने की वजह से ड्राई सीजन ज़्यादा हो गया और जो टेम्परेचर है वो 7 से 8 डिग्री ऊपर चल रहे हैं. देहरादून के 17 माफ़ कीजिएगा उत्तराखंड के 17 ऐसे शहर हैं जो 40 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं. देहरादून में कल ही जो तापमान था 42.8 डिग्री था. इसके अलावा देहरादून में पिछले 22 दिनों से टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री और 43 डिग्री तक जा रहे हैं. तो इसकी वजह यही है कि बारिश नहीं हो पाई है और जो जानकार है उनका ये कहना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई है और प्री मानसून जो समय पे आता था वो नहीं आ पाया है. हालांकि मौसम विभाग ने ये ज़रूर कहा है कि जो एमडी डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि 18 तारीख शाम से उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो जाएगी और जो प्री मानसून की दस्तक है वो उत्तराखंड में हो जाएगी और 25 तारीख से यानी 25 जून से मानसून की दस्तक उत्तराखंड में हो जाएगी. लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हीट वेव है, लगातार टेम्परेचर 40 से ऊपर है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है. दूसरी बहुत सबसे बड़ी दिक्कत है कि उत्तराखंड में जंगलों की आग इसी वजह से हो रही है क्योंकि बारिश नहीं है, ड्राई सीजन है और तापमान काफ़ी हाइट और ऐसे में जंगलों में आग लग रही है. पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है. उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ पे दर्जनों बड़ी नदियाँ हैं जो नॉर्थ इंडिया को काफ़ी सारा पानी देती है, लेकिन उत्तराखंड में खुद पानी की कमी है. तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि तापमान बढ़ने से एक तो बारिश नहीं हो रही है, दूसरा जंगलों में आग बढ़ी है और पानी की दिक्कत भी हो रही है. इसके अलावा हीट वेव का लगातार चलना उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए काफ़ी घातक है. और दूसरी बात यह है कि मौसम विभाग ने 18 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है हीट वेव का.